Hello everyone, my name is Falki Jain from Vidyanand Online and I welcome you all in this session in which we are going to study about Mendeleev periodic table. This is going to be a very interesting session because I have put a very interesting facts at the end of the session. So we have actually completed 30% of the session. So let us see what we have studied so far. So we studied that in 1789 a scientist named Lavoisier classified the elements on the basis of their physical properties. So he classified the elements as metals and non-metals. However, this type of classification was not so popular. Then came John Dobryner's. So Dobryner said that if you are arranging the elements in the order of increasing atomic masses, you will obtain triads. However, he was able to classify only 9 elements because he was able to make only 3 triads. Then came John Newlands. So in 1864, John Newlands presented his way of classification such that he said that when you are arranging the elements in the order of increasing atomic masses, then the first element will be having the properties similar to 8th element. However, there were a lot of anomalies and drawbacks in his way of classification. That is why in 1869, just after 5 years, came Mendeleev with his theory of classification. So today we are going to focus on how he did the classification of elements. Then in 1923 came Niels Bohr, who presented to us modern periodic table. So after covering Mendeleev periodic table, we are going to study about modern periodic table. So let us see how did Mendeleev did the classification. So talking about Mendeleev, Mendeleev was a Russian scientist, right? So he presented his periodic table in the year 1869. So Newland actually presented his classification method in the year 1864. So just after 5 years, Mendeleev presented his method of classification. So what did he say? According to his law, the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. तो अभी तो हमें ये लाइन बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि भाई एक्चुअली में ये है क्या. तो हम एक काम करते हैं, हम एक एक वर्ड को देखते हैं जो यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है. तो टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब क्या होता है? जब कोई रेगुलर इंटरवल में कोई चीज़ अगर होती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पेंडुलम की, तो पेंडुलम क्या होता है? यहाँ जाएगा टूवर्ड्स द राइट, उसके बाद फिर बीच में आएगा इन बिटवीन, एंड देन अगेन इट विल गो टू लेफ्ट एंड देन इट विल कम इन बिटवीन. तो ये क्या है? ये एक पीरियोडिक मूवमेंट है. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपनी पोजिशंस को चेंज करता है, राइट? सो व्हाट डिड मेंडेलीव सेड? ही सेड if you are arranging the elements in the order of increasing atomic masses, then the properties of elements are going to repeat after regular interval, right? तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी, पर एग्जाम में आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है वो यही लिखनी है. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. Okay, so when Mendeleev started his classification, then 63 elements were known at that time. So he was able to classify 63 elements that were known at that time in a tabular form. So this form is actually called as Mendeleev periodic table. Now let me explain you that how the elements were tabulated here. So what did Mendeleev does? He divided the periodic table in 8 groups and 7 periods. तो ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम, और पीरियड्स क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, राइट? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यू हैव 8 ग्रुप्स. यहाँ पे आपके 8 ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं? यहाँ पे मेंशन तो 6 पीरियड्स हैं. हाउएवर he made 7 periods. The 7th period है that was incomplete and that is why it is not mentioned here. Next, from group number 1 to 7. So 1 to 7 के अंदर आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब जिसमें आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में. अगर हम बात करते हैं 8th ग्रुप की, तो 8th ग्रुप में है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था. ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल दोनों शेल अगर पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, देन दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो
The third point is that the periods from 4 to 7 have been divided in 2 series. तो अगर आप यहाँ देखो, आप 4th, 5th, 6th, यहाँ पे आपके 2 सीरीज हैं. सो यहाँ पे ये 1 सीरीज ये है और दूसरी सीरीज ये है. सिमिलरली यहाँ पे भी एक सीरीज ऊपर है और एक सीरीज नीचे है. सो देयर आर 2 सीरीज इन दीज पीरियड्स, राइट. नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 1 to 7 हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स A and B. तो ग्रुप्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पे सब ग्रुप्स भी हैं, A and B. अब क्वेश्चन आता है कि वाई दी सब ग्रुप्स आर देयर. एक्चुअली ही फाउंड दैट जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं विद इन अ ग्रुप, उनको उन्होंने सेम सब ग्रुप में रख दिया. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर है एक दूसरे से. वेयर एज कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर है. तो क्योंकि विद इन अ ग्रुप कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, तो उनको उन्होंने एक सब ग्रुप में रखा है, राइट. दैट वाज द रीजन विद इन अ ग्रुप देयर वर सब ग्रुप्स. और अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, तो यहाँ पे आपके पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स. Now let me explain you via which idea Mendeleev classified the elements. So actually Mendeleev was writing a chemistry textbook for his students. So he was a teacher and he wanted to organize all the elements that were known at that time according to their chemical properties. So it is actually the property of a teacher कि टीचर का हमेशा यही काम होता है कि वो जितनी भी नॉलेज होती है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में स्टूडेंट्स को डिलीवर करे. So Mendeleev also wanted to do the same. He wanted to explain the elements that were known at that time in the best possible way. For this, what did he do? He made फ्लैश कार्ड्स. तो फ्लैश कार्ड्स में क्या करा उन्होंने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट का सिंबल लिखा, उसमें उसका कितना एटॉमिक मास है वो लिखा, और उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड बना के उसको मेंशन किया. अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स क्यों बनाए. एक्चुअली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर केमिकली वेरी रिएक्टिव. तो उन्होंने क्या करा, 63 एलिमेंट्स जो कि वहाँ नोन थे, उन सभी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना के फ्लैश कार्ड्स में लिखे. फ्लैश कार्ड्स में लिखने के बाद व्हाट ही डज वाज ही प्लेस देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, दिस इज बेसिकली द कार्ड गेम, जिसमें हमने क्या करा, अरेंज करे हैं कार्ड्स को फ्रॉम A to K, दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो विद द सेम कॉन्सेप्ट इन माइंड, he arranged the elements in the order of increasing atomic masses. So he found that at regular interval of time जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही हैं. मतलब जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बन के आ रहा है, हाइड्राइड का फॉर्मूला बन के आ रहा है, वो भी रिपीट हो रहा है. जो फिजिकल और केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट्स का, वो भी रिपीट हो रहा है. जस्ट लाइक दिस पेंडुलम. So pendulum also swing back and forth in each time interval, and that is why the movement of pendulum is periodic. Similarly, he found that there is repetition pattern which he named periodic. That is why his law is called periodic law. Now let me explain you this important question. तो ये question है कि आपके पास कुछ elements हैं which are potassium, carbon, aluminium, silicon और barium. अब नाउ फॉलोइंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको ये बताना है कि ये कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे. सो एक्चुअली बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये ऑक्साइड्स बने कैसे. अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्साइड्स बने हैं एलिमेंट्स के. तो ये जो R है ये एलिमेंट है, जेनरिक हमने टर्म यूज़ कर रखा है एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए. तो अब क्वेश्चन है कि ये कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे. तो उसका डिपेंड करता है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप नंबर में फॉल कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की K, सो इट इज़ फॉलोइंग इन ग्रुप नंबर 1. तो जो पोटेशियम के हम बैलेंसी रखेंगे वो रखेंगे 1, ठीक है, और ऑक्सीजन हम रखेंगे -2. तो ये कितना हो जाएगा, K2O. दैट इज़ वाई तो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो होगा K2O. अब हम बात करते हैं कार्बन की. तो कार्बन कौन से ग्रुप नंबर को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4. सो C और यहाँ पे आप लिखिए 4 एंड O इज -2. तो 2 और 2 2 4 करा, तो उसको हम ये कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इट वुड बी CO2. ठीक है. अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की. सो एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3. यहाँ देखिए इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3. इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी रखेंगे हम, इट वुड बी 3 एंड ऑक्सीजन इज -2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इट वुड बी Al2O3.
राइट अब बात करते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 अगेन। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा एंड देन इट इज -2, 2 से 2 कैन 2 2 से 4 हुआ, तो इट वुड बी SiO2. सो इट्स ऑक्साइड फॉर्मूला इज SiO2. नेक्स्ट इज बेरियम, Ba. सो बेरियम कहाँ आता है? इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2 इसका मतलब इसकी वैलेंसी को भी हमने 2 रखना है, तो 2 यहाँ पे एंड दिस इज -2 कैंसल आउट हुआ, तो इट विल बी BaO. राइट, तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली फॉर्म दी ऑक्साइड्स. तो इसकी जो ऑक्साइड्स हैं उसको फॉर्म करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ओके, now this is very important. What are the merits or what were the achievements of Mendeleev periodic table? So the very first achievement was he was able to predict the elements which were not discovered at that time. So isn't it amazing? He left vacant spaces in periodic table and correctly predicted the existence of undiscovered elements. For example, if you consider this table here, these vacant spaces were left here. Atomic mass 44, 68 and 72. So when these elements were discovered later on, they were placed in those gaps without disturbing the existing elements. For example, at 44, the element which was discovered was scandium. And he named that element as Eka boron. Eka boron. What is Eka? Eka means first come boron and then the element will come. So Eka is the word which is derived from Sanskrit. Now talking about the element which is there at atomic mass 68. So it was Eka aluminium. Later on gallium was discovered and it was placed at this position without disturbing other elements. Next, it was Eka silicon. So these were the names which were given by Mendeleev. So when germanium was discovered, it was placed right here. Therefore, he was able to correctly predict the elements which were not discovered at that time. Now in order to learn that Eka boron was replaced by scandium, and Eka aluminium was replaced by gallium, and Eka silicon was replaced by germanium. So you can actually remember this mnemonic ScanBo. So Eka boron was replaced by scandium, then alum girl. So Eka aluminium was replaced by gallium, and then silly man, which means Eka silicon was replaced by germanium. So this is just a mnemonics in order to remember this. Now the next was he was able to correctly predict the properties of those undiscovered elements. So he predicted the properties of undiscovered elements and his prediction were found to be very close to the actual properties. For example, if you see this table, Mendeleev said that Eka aluminium will have oxide formula as Ea2O3, and when gallium was discovered, its oxide formula was also Ga2O3. Similarly, the density which he predicted about gallium was also nearly equal to what the observed density was. So this was the commendable efforts done by Mendeleev. The next achievement was he was able to accommodate noble gases in his periodic table. So in Mendeleev periodic table, noble gases were placed in separate group without disturbing the positions of already placed elements. So at the time when Mendeleev was doing the classification, noble gases were not discovered. In fact, noble gases were discovered very later on because noble gases are unreactive. So these were the achievements of Mendeleev periodic table. Now let us see the drawbacks of Mendeleev periodic table. So the very first drawback was position of isotopes. So isotopes of an element have same atomic number and different mass number. Now since Mendeleev classified the elements in the order of increasing atomic masses, so he couldn't justify why there is no separate position for isotopes. For example, element chlorine have isotopes chlorine 35 and chlorine 37 having different masses, but they were placed in the same group.
Then the next was position of hydrogen. So hydrogen actually closely resembles to both alkali metals and halogen. However, Mendeleev kept it with alkali metal without any strong argument about that. The last disadvantage was there were some pairs which did not follow the increasing order of atomic masses. Since Mendeleev told that I am arranging the elements in the order of increasing atomic masses, so the table should follow the same. However, there were some elements which were not following that concept. For example, if you see here, iron, cobalt and nickel, they are not placed in the order of increasing atomic masses. Now I am going to share with you very interesting facts about Mendeleev periodic table. So it was not only Mendeleev who did the classification in this way. Julius Luther Mayer also did the classification the very same way how Mendeleev did in the year 1870. He also left vacant spaces and he also predicted the properties. However, he did not strongly focused on those vacant spaces and properties, and that is why Mendeleev became famous at that time. Mendeleev died without a Nobel Prize in 1907. So he was nominated thrice for the Nobel Prize. However, he was not able to get Nobel Prize even once. But he received much more exclusive honor. So if you see here in the periodic table, the element at atomic number 101 is Mendelevium, which was given on the name Mendeleev. Mendeleev not only predicted the existence of undiscovered elements, he was also able to correct some of the atomic masses of elements. For example, atomic mass of beryllium was initially 13.5 and Mendeleev corrected it to 9. Similarly, atomic masses of indium, gold and platinum were also corrected by Mendeleev. Wasn't that astonishing? So you have completed the entire Mendeleev periodic table. Now I am going to meet you in the next session in which we are going to study about modern periodic table. Till then, do follow us on Facebook, do follow us on Insta and do subscribe us on YouTube. Bye bye and take care of yourself.